Hello students, this is the topic of 10th class of chemistry, chemical reaction equation. Students, in this lecture we discuss some types of reactions. First reaction were combination reaction. The reaction in which two or more substances combine to form a single substance. Okay, under suitable means दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जब मिलकर वो सिंगल सब्सटेंस का प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. अभी इससे कुछ मेन पॉइंट्स हैं. मीन्स combination may takes place between two or more elements like H2 plus Cl2, that is 2HCl, between two or more compound. Two or more compound means like H2O plus CO2, that is H2CO3. Okay. Third, between elements and compounds like CH4 plus Cl2. Okay. Important, in a combination reaction only a single substance is formed. ओके कोई भी कॉम्बिनेशन आप कीजिए उसमें क्या होगा, दो या दो से सब्सटेंस मिलकर सिंगल सब्सटेंस का प्रोडक्शन करेंगे. ओके, नो एग्जांपल्स आर हेयर. कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जांपल्स: combustion of coal, that is C plus O2, that gives CO2. Combustion of hydrogen, H2 plus O2, that is water. Formation of iron sulfide, that is Fe plus S, that is iron sulfide. Combination of ammonia and hydrogen chloride gas, that is ammonia plus HCl. Hydrochloric or hydrogen chloride gas, that is ammonium chloride. Now formation of ferric chloride, that is iron plus Cl2, that gives ferric chloride. Okay, that are the examples of combination reactions. Okay, next. Now some more examples are there. Here we discuss that is between nitric acid and oxygen. Okay, that is NO plus O2, that gives NO2. Combination between hydrogen and chlorine, that gives H2 plus Cl, that gives 2HCl. Now decomposition reaction. The reaction इज जस्ट अपोजिट कॉम्बिनेशन, मीन्स कॉम्बिनेशन का अपोजिट है, उसमें जुड़ना था इसमें टूटना है. एंड इट में डिफाइंड एज द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंगल सब्सटेंस अंडर सूटेबल. मीन्स इसमें क्या होगा, कोई आपका सिंगल सब्सटेंस है दैट विल स्प्लिट, टूटेगा, ब्रेकअप होगा वो टू और मोर सब्सटेंसेस. ओके, दैट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. ओके, नाउ हियर. Now some more points, important points about decomposition. Decomposition is always endothermic. Endothermic means heat is absorbed, energy absorbed. But which type? Energy in the form of heat and light or electricity is absorbed in endothermic. Exothermic is just opposite to reactions, that is in which heat is evolved. Exo means exit. Now examples of decomposition reaction: potassium chlorate, KClO3, that इफ यू हीट इट मीन्स इसको हीट कर रहे हैं हम, एंडोथर्मिक, हीट ऑब्जर्व करेगा. देन पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन. डीकम्पोज लाइमस्टोन, दैट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक, हीट को ऑब्जर्व करेगा, दैट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. और सम मोर एग्जांपल्स आर देयर. डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, दैट गिव्स अमोनियम डाइक्रोमेट. Here NH4 whole twice Cl2O7, heat Cl2O3 plus N2 plus 4H2O, that is chromium oxide. इसमें heat absorb हो रही है, is also endothermic and decomposition. Now decomposition hydrogen peroxide H2O2, decompose gives water plus oxygen. Now do you think digestion of food is also a decomposition reaction? Means the food we eat, that is a carbohydrate, and that decompose in the process of digestion into simpler substances. Okay, now here. Now next, displacement. Displacement, displace करना. ठीक है. The reaction in which one element takes the position of और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट, मीन्स एक एलिमेंट जो मोर रिएक्टिव है आपका रिएक्शन में, वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे, उसको उठा देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा.
नॉर्मली मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स, मीन्स कि मोस्टली मेटल्स में होती है. एग्जाम्पल जिंक प्लस आयरन सल्फेट दैट गिव्स जिंक सल्फेट प्लस आयरन. इन दिस रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव आयरन, जिंक ने इसको डिस्प्लेस किया है. नेक्स्ट रिएक्शन आयरन प्लस लेड नाइट्रेट दैट गिव्स लेड, वो आयरन नाइट्रेट फेरिक नाइट्रेट प्लस लेड. इन दिस रिएक्शन iron is more reactive than lead. Here I show here. Next, lead plus copper chloride that gives lead chloride plus copper that gives. In this reaction, lead is more than copper. Copper plus silver nitrate that gives copper nitrate plus silver. These are four more important points. Zinc more reactive than iron. Iron is more reactive than lead. Lead is more reactive than copper. Copper is more reactive than silver. Okay. Next. Now here, that is some more examples of displacement reaction. Right here, that is aluminium plus manganese dioxide that gives aluminum oxide plus manganese. In this reaction, aluminium more reactive than manganese. Important. Now as in the reaction जो हमने पढ़ी उसमें था कि metals की reaction थी, but this reaction not between metals but also between non-metals like chlorine plus potassium bromide that gives potassium chloride plus bromine. In this, chlorine is more reactive than bromine. Now here chlorine plus potassium iodide that gives potassium chloride plus iodine. Now double displacement reaction. Before this we read about displacement. इन डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उसमें ओनली वन का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, बट इसमें दो का होगा. रिएक्टेंट में the reaction in which one component from each reacting molecules get exchanged to form the products like here. इसमें देखिए इसका और इसका क्या होगा, वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मीन्स सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड that gives silver chloride plus sodium nitrate. Here white precipitate. It is also a precipitation reactions. The reaction in which solid substance formed and that cannot dissolve in that solvent. For example, दूध से पनीर बनाते हैं आप, तो पनीर क्या है उसमें दोबारा से डिजोल्व नहीं होता है. दैट इज ऑल्सो ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ओके. नाउ नेक्स्ट, lead nitrate plus sodium sulfate that gives lead sulfate plus sodium nitrate. Here copper sulfate plus hydrosulfide that gives copper sulfide that is black precipitate plus sulfuric acid. Barium hydroxide plus NH4Cl, BaCl2 plus ammonium hydroxide. These are the precipitate. Okay. And the arrow which show I here precipitate resolve means to settle down. HCl plus NaO that gives NaCl plus. This is also called a neutralization reactions. HNO3 nitric acid plus potassium hydroxide that gives potassium nitrate plus water. Now students, I give you so many examples out of which you learn some examples. Not necessary to learn all examples. The example which you think easy, which is easy to learn, which is easy to write, you can learn here. In the next topic, we will discuss some more topics of these reactions. If you have any problem in this topic, then you may write on comments. Okay. Till then, goodbye.